हेलो नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। 20 नवंबर को कतर में जो काफ़ी विवादों के बीच वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, उसमें अब हर टीम का ग्रुप स्टेज का पहला मैच हो चुका है और अब चीज़ जो तस्वीर है ग्रुप स्टेज की काफ़ी साफ हो चुकी है। आज हम डायरेक्टली कतर से हमारे साथ सिद्धांत जुड़ेंगे और आप तक हम सारी अपडेट्स कतर से लेकर आएंगे और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का डायरेक्टली जो माहौल है वो क्या है, आने वाले जो मैचेस हैं उसमें किस तरीके का माहौल रहने वाला है और जो सर्टेन चीज़ें बैन हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सीज अराउंड द ग्लोब इस वर्ल्ड कप के बारे में हुई हैं, उसका अभी क्या स्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है। तो सिद्धांत, सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि हमने देखा है कि फुटबॉल एक स्पोर्ट के तौर पर और फीफा भी हमेशा से रेजिस्टेंस को मतलब जाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म रहा है कई लोगों के लिए, और वो हमने कतर में भी देखा। जब शुरू हुआ तो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इस वर्ल्ड कप को लेकर हमको देखने को मिल रही हैं। तो आपने क्या देखा पिछले 5 दिनों में जो कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है? क्या माहौल है वहाँ पर कंट्रोवर्सीज को लेकर? और बहुत ज़्यादा ही अराउंड द ग्लोब थोड़ा सा विवाद हो गया था, तो हाउ इज द मतलब व्हाट डू यू सी देयर ऑन द ग्राउंड? Yeah, thanks, Satyam. It's been actually I think the most positive sort of scenario that has emerged is that these conversations are happening. So from the time when 2010 में कतार को वर्ल्ड कप अवार्ड किया गया था, तब से ही ये विवाद sort of शुरू हुआ था. And suddenly from a country that had very little in that sense footballing infrastructure, सीधा ही उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं हम. उससे फिर 2011 में उन्होंने एक्चुअली एशियन कप होस्ट किया था, तो और इंडिया भी खेल रहा था उस टूर्नामेंट में काफ़ी सालों बाद. तो 2011 में मैं पिछली बार आया था दोहा. तो पिछले 10 साल में काफ़ी बदल गया है सिटीस्केप, लैंडस्केप यहाँ का. जो पहले एसेंशियली डेजर्ट लैंडस्केप था, अभी उसका हाल काफ़ी चेंज हुआ है. एंड इसको चेंज करने में ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा हाथ रहा है लोगों का, लेबर का, जो मोस्टली साउथ एशिया से आया है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया से आया है. एंड ऑफ कोर्स वी आर अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशंस एंड इश्यूज दैट हैव कम अप, including more than 6,500 people, definitely mostly men from South Asia, who have died in constructing the infrastructure around this World Cup. So in our first conversations, or my first conversations here, have been with people who have been working here. Over 95% of the workforce is a migrant workforce in this country, right? Because locals are A, few in number, and B, quite rich. So they choose not to, and they tend not to do too much work. So all of the work is essentially across the board, whether it's straight up manual labor or even high-end jobs, are done by people from outside. And 25% of the population of residents here is from India itself. So therefore, it's very easy to have conversations, to talk to people across the spectrum and understand what's happening. So one of the clear impacts has been that the conditions for labor, because like you were mentioning, because it's a global platform, because global conversations are happening, because there's global media attention, things have changed and improved dramatically. For example, I was talking to some cleaning staff at a couple of stadiums that we have already attended. And they were saying salaries have improved, living conditions have improved. Of course, there are still basic rights, labor rights, that are not granted to people here. The right to unionize, the right to actually voice your sort of opposition or stage protests. Those things are not permitted here. So that and of course, then around that, because of this media attention, several other controversies and issues, whether it's LGBTQ rights, like we're talking about the protest movement in Iran that's happening, and of course the clear conflict lines have been drawn here between the West, the Eurocentric sort of Orientalist worldview, and the rest of us who actually live in these conditions. So I guess
the foundation or the battle lines in that sense have been drawn, and now it's and see where we go from here. हम इसी पे LGBT से मैं आपको वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। जब हम टीम्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि जर्मनी का अपने पहले मैच में जो जापान के साथ मैच था उसमें एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। तो अभी ये बात आ रही है, मेन मेरा सवाल ये है कि डेनमार्क के बारे में कहा जा रहा है कि यूएफा नेशंस के साथ जो है वो इसको बॉयकॉट कर सकता है। मतलब ये कितना जो है सच है इन मिडिल ऑफ अ वर्ल्ड कप जहाँ पे 32 टीमें हैं, वहाँ पर अगर बात हो रही है कि 5-6 टीमें निकल सकती हैं, तो ये क्या है, पूरा सीन क्या है इसका? So at this stage, I don't think any of these teams are intending at all to pack up and leave, right? ऐसा होना बहुत मुश्किल है, I think, and there is so much more at stake, particularly in terms of money. So this entire conversation needs to be put in the context of big football, big money, and how all of that functions, right? All of these countries knew the scenario have known the scenario for the last 12 years. So it is not something that आज ही इनको पता चला कि ऐसा हाल है या यही दिक्कतें हैं. FIFA itself, like all electoral politics, is based on vote banks, and the president and other functionaries are elected. The current president is, of course, Gianni Infantino. We all heard the speech that he made saying that he's all kinds of things. It was a bit bizarre, but he did make a very valid point that Europe needs to understand, accept its own hypocrisy a little bit, its own double standards a little bit, and also sort of understand and accept that there is a larger world that doesn't necessarily accept a Eurocentric way of functioning. And UEFA and FIFA have always had this fight because it's essentially a question of money. There is one tournament that makes a huge amount of revenue for FIFA, and that is the Men's World Cup, unfortunately. So in a 4-year cycle, if you look at FIFA's financial statements, the only thing that makes a profit is this event that is currently happening. Everything else is where you spend then that money, right? So in that context, UEFA always wants to, because the UEFA Champions League and the UEFA European Championships are also huge money spinners. They consistently want to dominate, whether it's in terms of media rights, whether it's in terms of advertising, and whether it's in terms of hosting and sort of maximizing the kind of profit that they make out of this whole revenue cycle. FIFA, of course, has a different point of view on it because they are a separate entity and they want to take the profit for themselves. So no one is really in it for either the good of the game or sort of any kind of ground up movement to have these kind of conversations, create real inclusivity. None of that. It really has to be, this is the World Cup of capitalism. तो हम गेम्स की बात कर लेते हैं। जो भी अभी हमने देखा कि ग्रुप स्टेज में एक गेम हर टीम का हो चुका है, सारी 32 टीमों ने पहला गेम खेल लिया है अपना। और जो सबसे बड़ा अपसेट ऑब्वियसली अर्जेंटीना एंड सऊदी अरेबिया, और उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान ने हराया जर्मनी को या सऊदी अरेबिया ने हराया, कल का जो मैच था उसको ड्रॉ करा ले गया साउथ कोरिया। तो ये जो हम चीज़ देख रहे हैं इसके बारे में, और ये जो सबसे बड़ा अपसेट यही जो अर्जेंटीना वाला गेम है ऑब्वियसली, उसके बारे में कुछ बात कीजिए। और फिर हम पॉइंट्स टेबल को भी देखते हैं कि हर ग्रुप में क्या चल रहा है। ठीक है। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक कॉलीग से मेरी बात हो रही थी, फेलो जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो हमारे यहाँ से ही है, और वो थोड़ा ये बोल रही थी कि एशियन कंट्रीज और बाकी सब में इतना बड़ा गैप है, ये है वो है, एंड लाइक दे आर जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स इन द सेंस कि सिर्फ पार्टिसिपेट करने आए हैं, कोई उम्मीद नहीं है इनमें से किसी देश से या किसी टीम से. Clearly that has been thrown out of the window, and I think in that sense जो शुरुआत हुई है इस वर्ल्ड कप की काफ़ी मज़ेदार शुरुआत हुई है.
Nobody in the world, not even the Saudis, expected that result against Argentina. You know, there's a great meme going around about the goat. Yeah, Messi. Yeah. So it is sort of a challenging scenario. Hervé Renard, who's the coach, is a French coach of the Saudi team, was saying that it is challenging for the top players in the world to find perhaps the motivation to pump themselves up, particularly in the opening game of a tournament, to play against a team that you don't expect to really do much against you. Of course, Argentina received, celestial slap in that sense, wake-up call, and they have still, the tournament is very much open. We have to remember that in a sporting context, ये लंबा tournament है, महीना long tournament है, और छोटी टीमों की सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है कि आप अपने पहले मैच में ज़्यादातर सब कुछ लगा देते हैं on the line. So सऊदी की गेम में जैसे 6 येलो कार्ड मिले सऊदी प्लेयर्स को, 2 प्लेयर इंजर हुए, तो अगले मैचेस में वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, there's a question mark around that. They still, I think, have the quality to do it, but you never know. With Saudi, not maybe so much. I don't really expect them to continue. Although statistically, अगर देखा जाए, the only teams that have beaten Argentina in the past in this kind of opener have gone on to either play in the finals of the World Cup or win the World Cup. Okay. But like the coach was saying, let's not get carried away, keep our feet on the ground and take it one match at a time. Of course, these are all cliches, but and the players will be flying, and that confidence that they will bring to the matches will, of course, add a different kind of flavor to the rest of the tournament. But overall, for the Asian teams, except for Qatar, who are currently playing against Senegal as we speak, except for Qatar, they have, I think all the Asian teams have demonstrated that the gap that exists, and it clearly exists, between whether it's African countries or European countries or Latin American countries and the Asian continent, is somewhat reducing, at least at this level. We also have to remember that जैसे अब ये 6 टीमें एशिया से खेल रही हैं जो वर्ल्ड कप में, उनके बीच और जो बाकी एशियन कंट्रीज है उनके बीच बहुत बड़ा गैप है. बस हम ग्रुप टेबल देख लेते हैं, देन योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई विल टेक. तो अभी हमारे पास स्पेन ने 7 गोल किए हैं. सबसे बड़ा मैच वो था स्पेन और कोस्टा रिका का. कल पोर्चुगल 2-3 से जीता है, पर वो घाना का लास्ट वाला सब लोग कह रहे हैं कि लास्ट मिनट गोल वो हो सकता था. और हमारे पास फिर अब आने वाले मैचेस जो हैं, अब दूसरे मैच सबके शुरू हो गए हैं. ईरान का आज दूसरा मैच था और अब 2-0 से वेल्स को ईरान ने हरा दिया है. तो अब जो नए मतलब दूसरे मैच जो होंगे ग्रुप्स के, उसमें क्या लग रहा है कि मतलब अब कौन सी टीम एक तरह से कमबैक, जो कि पहले मैचेस में नहीं कर पाई है, वो बस कंक्लूडिंग रिमार्क्स, उसके बाद फिर हम इसको जो है ख़त्म करेंगे. हाँ, so Germany, I guess, would be first up, right? So different scenario. They are playing Spain next. Of course, that is billed as one of the biggest games of the group stages, because दोनों टीमें are among the best in the world, and Spain in that sense is also very interesting because they play without an out-and-out striker as such, and yet they score 7 goals in the opening match, right? So again, it demonstrates that kind of collective tactical planning and how any player essentially can play in any position and score goals. Costa Rica, unfortunate, and they will not be looking forward to their other 2 games either, because they are playing Japan and Germany. So this is a really, really difficult group for Costa Rica, and they are probably at this stage the whipping boys in that sense of this tournament. It's up to Germany to make a comeback. Argentina as well. Argentina have a relatively easier, I suppose, path ahead, because they play Mexico and then Poland. And then Poland, yeah. And Poland is a team that never really comes to a big tournament to play somehow.
they have Robert Lewandowski, of course, who also missed a penalty. But somehow, as a team, they always seem a bit iffy. I mean, they're in it only because Russia was thrown out, banned from the tournament, which should also be, I guess, a talking point at some stage. But yeah, so Argentina, in that sense, I think have the possibility of still winning their next two games. And the good thing is, after the loss against Saudi, they have to win the next two games. So they will play a little more open, expansive football. So for neutral fans like us, who are just in it to watch, some fun football, it'll be a lot more attacking. It'll be a lot more interesting to watch. Because no one will hold back and say, oh, let's play out a 0-0 and be happy. I think the favorites have to be the normal guys, France, Spain, Brazil to an extent, and then Japan. चलिए, तो ऑन दिस नोट हम इसको यहाँ पर करते हैं वाइंड अप, और हम आने वाले हफ्ते में जब हम मिल रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है ग्रुप स्टेज की साफ़ हो चुकी होंगी, और मे बी हम सुपर 16 भी शुरू हमारा हो चुका होगा. तो थैंक यू सो मच सिद्धांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और कतर से जो भी अपडेट्स हैं हम अपने दर्शकों को आपके ज़रिए पहुंचाते रहेंगे. फीफा वर्ल्ड कप कतर में चालू है 20 नवंबर से. 18 दिसंबर को फाइनल होने वाला है. देखना है कि आने वाले मैचेस में क्या माहौल रहता है. तो कतर से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक डायरेक्टली कतर से लाते रहेंगे, और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ. हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है. देखने के लिए शुक्रिया.